श्री नरेश बंसल। धन्यवाद चेयरमैन सर। सहारनपुर देहरादून चक्राता उत्तरकाशी एवं देहरादून सहारनपुर रेल लाइन और हरिद्वार देहरादून के बीच बड़ी रेल की आवश्यकता है। यह दुख का विषय है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी पहाड़ रेल व 4 लेन एवं ऑल वेदर रोड से वंचित रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दर्द को समझा व इसकी मंजूरी देने के साथ ही लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम के तहत इसका कार्य भी शुरू हो गया, जो निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में पूरा भी होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी के धाम का विकास कार्य जो हो रहा है, उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं। विकास कार्य हर क्षेत्र में हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से अपने प्रधान सेवक का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। चक्राता उत्तरकाशी आदि भी रेल लाइन से वंचित है, जहां हरिद्वार देहरादून के बीच कई प्रमुख रेलों का संचालन नहीं है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को देहरादून रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाना बाकी है। सहारनपुर देहरादून के बीच सीधा रेल संपर्क नहीं है, जिससे हरिद्वार की ओर से आना पड़ता है। वह समय बहुत अधिक लगता है, वह माल भाड़ा भी बहुत अधिक हो जाता है। साथ ही चक्राता, मसूरी, उत्तरकाशी जो उत्तराखंड के मुख्य धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, वह सुरक्षा की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर अभी तक रेल सुविधा नहीं है, जो चिंता का विषय है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देहरादून सहारनपुर रेल लाइन, देहरादून हरिद्वार के मध्य बड़ी रेल व सहारनपुर देहरादून चक्राता मसूरी उत्तरकाशी रेल लाइन की आवश्यकता है। थैंक यू सर। डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे। नॉट प्रेजेंट। श्रीमती शांता छेत्री। Thank you, sir, for allowing me to speak. Sir, I would like to draw your kind attention that the children of our brave soldiers suffers untold pain both psychologically and materially when they suddenly and unexpectedly lose their parents in the service to the nation. Sir, without a parent, life becomes a misery to the extent that none can comprehend it. The minor suffers plight, both psychological and material. Therefore, I would like to urge the Honorable Prime Minister through you, sir, that the children of the March Gorkha Rifle soldiers be included in the reservation quota. Our Shaheed deserves this for their supreme sacrifice. Thank you, sir. श्री कैलाश सोनी। माननीय सभापति जी, सदन के माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। लोकतंत्र में पत्रकारों की अहम भूमिका आजादी के समय से वर्तमान तक अति महत्वपूर्ण रही है। इनके माध्यम से जन सरोकार के मुद्दों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को, सदन को, सरकार को प्राप्त होती है। इनमें लंबे समय से देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के कारण पत्रकारों को मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे पत्रकारों को उनके कार्यों की सुगमता एवं उनकी भूमिका को देखते हुए सरकार को उन्हें रेल में एवं टोल नाकों वगैरह पर जो पूर्व में कुछ रियायतें दी भी जाती थी, पर छूट प्रदान की जावे, जिससे जन सरोकारों पर काम करने की उनकी वृत्ति और मजबूत होगी। श्रीमती वंदना चौहान। Sir, through this special mention, I wish to draw the attention of the government to a serious issue regarding malnutrition of children, especially of migrant workers, sir. So child malnutrition is a long-standing chronic problem in our country.
Despite decades of investment to tackle this malaise, India's child malnutrition rates are still one of the most alarming in the world. Though there are several schemes of the government, however, since there is no or failed real-time monitoring systems, the children, especially of migrant workers, who travel from rural to urban areas or to different states in search of livelihood are the worst affected. Existential struggle, low wages, harsh exploitative work conditions, and economic vulnerability result in no time to access government schemes, resulting in an extremely dire situation for their children, leaving them deprived of education and nutritional needs. Undernutrition has long-term effects, morbidity, mortality, and chronic disease impairment. It also affects the physical and cognitive development of a child, rendering their future bleak. It is estimated there are approximately 100 million short-term migrants in India, out of which approximately 10 to 15 million are children. Poshan Abhiyan in the recent times sought to scale up the ICDS program through several important interventions. However, children of migrants still face several hurdles in accessing their entitlements. It is important that the government addresses the critical gap in migration literature and further devises a methodology to reach migrant communities to provide them with a holistic social cushion. Thank you, sir. Ms. Dola Sen, not present. Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सदस्यों को बोलकर स्पेशल मेंशन रखने का आपने अवसर दिया। मेरा स्पेशल मेंशन दियारा को किसानों के शब्दकोश से बाहर कर कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में है। देश के कई राज्यों असम, बिहार, बंगाल आदि में किसानों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यह सब न सिर्फ किसानों की सामाजिक आर्थिक जीवन को दुर्भर करता है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश के कृषि उत्पादन पर भी पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन के कारण वित्तीय दबाव भी रहता है। असम में ब्रह्मपुत्र, बिहार में कोसी और गंगा नदियों के कारण करोड़ों किसान पीढ़ियों से प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ के कारण दियारा क्षेत्र का विस्तार होता है। दियारा में 2 फसल साधारणतया नहीं हो पाती है। अस्पताल, स्कूल, सड़क का अभाव या होने पर भी उनका पानी में डूबना, भवन टूटना जारी रहता है। उदाहरण के तौर पर बिहार के बेगूसराय में 43% भूमि दियारा है। इन क्षेत्रों भवानंदपुर, बिशनपुर, मकसदनपुर, मधुरापुर, नया गांव, चौथम जाकर स्वयं देखा कि छोटे किसान तंगी हालत में हैं। यहाँ के अधिकांश किसान भूमिहीन बनते जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बाढ़ के विध्वंस के कारण औसतन 2 बार रहने का स्थान बदलने के लिए बाध्य होता है। इसका समाधान रिंग बांध है। केंद्र सरकार की पहल की आवश्यकता है। उत्तर और मध्य बिहार में स्थित पटना, खगड़िया, बेगूसराय का 40% कृषि भूमि दियारा है। असम में ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ हजारों हेक्टेयर दियारा है। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि नीति आयोग के अंतर्गत एक कार्य दल का गठन कर देश में दियारा को श्रेणियों में बांटे। साथ ही किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए राष्ट्रीय दियारा बोर्ड का भी निर्माण होना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity on the special mentions. The subject of the special mention is inclusion of 3 tribal languages spoken in Odisha within the 8th schedule of Indian Constitution. Languages spoken by our tribal brothers and sisters are precious for India. There is a huge need for including 3 major tribal languages, Ho, Mundari and Bhumij, in the 8th schedule of the Constitution. Language is extremely important as an ethnic identity, and with a scheduled tribe population of over 22.85%, Odisha is home to 62 tribal communities, including 13 particularly vulnerable tribal groups. Inclusion of Ho, Mundari and Bhumij languages will go a long way
in fulfilling the long-standing demands and aspirations of the tribal communities speaking these three languages. Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, has written in this regard to the Honorable Union Home Affairs Minister earlier and requested the inclusion of three languages in the 8th schedule of the Constitution. Ho language is spoken by nearly 10 lakh tribal people living in Odisha and Jharkhand. After Santali, which has already been included in 8th schedule, Ho is second most widely spoken tribal language in Odisha. Mundari is spoken by more than 6 lakh people belonging to the Munda and Mundari tribes of Odisha. Mundari is spoken by more than 6 lakh people belonging to the Munda and Mundari tribes of Odisha. Bhumij is spoken by about 3 lakh people. The Odisha government has initiated several steps for giving recognition to the tribal languages. However, there are some tribal languages in Odisha which highly deserve to be included in the 8th schedule of Constitution. I strongly demand that Union government takes necessary steps for inclusion of Ho, Mundari and Bhumij languages in the 8th schedule of Indian Constitution. Thank you, sir. Shri Ghanshyam Tiwari. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राजस्थान के सांगानेर का जो हाथ उद्योग है प्रिंटिंग का, उसके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में सांगानेरी हाथ ठप्पा छपाई हस्तकला करीब 500 वर्ष पुराना लघु उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में इस उद्योग में निर्मित वस्त्रों की स्वदेशी पूर्ति के साथ विदेशों में भी निर्यात किया जाने लगा है, जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होने लगी है। सांगानेरी हाथ ठप्पा छपाई उद्योग कार्य कुटीर उद्योग की श्रेणी में घरों में किया जाता है। इस उद्योग में छपाई हेतु जो रंग काम में ले जाते हैं वे प्राकृतिक और वनस्पतिक होते हैं, जैसे हरड़ा, दावड़ा, आल की लकड़ी का रंग। वर्ष 1944 में पंजीकृत कैलिको प्रिंटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी सांगानेर द्वारा हाथ ठप्पा छपाई वस्त्रों के उत्पाद निर्माण से लेकर विक्रय तक की व्यवस्था की जाती है। सोसाइटी स्वयं कच्चा माल लेकर अपना उत्पाद बनाती है। सोसाइटी के निर्मित उत्पाद जैसे बेड शीट, पिलो कवर, साड़ी, सूट इत्यादि हैं। इस उद्योग में बहुत कम मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है तथा उपयोग उपरांत निकलने वाला पानी नगण्य प्रदूषित होता है। इस उद्योग को भारत सरकार ने जीआई प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। वर्तमान में सरकार द्वारा इस उद्योग को प्रदूषण की रेड श्रेणी में रखा है। उल्लेख करना चाहूंगा कि इस हस्तकला उद्योग को सरकारी सुविधा एवं संरक्षण के बजाय आए दिन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा बिजली कटाई के नोटिस दिए जा रहे हैं। सांगानेर में एक अन्य इसी प्रकृति का हाथ कागज उद्योग है, जिसे ऑरेंज प्रदूषण श्रेणी में डाला हुआ है। अतः सांगानेर की हाथ छपाई उद्योग को प्रदूषण की रेड श्रेणी से हटाया जाकर ऑरेंज श्रेणी में करने का निवेदन है। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। धन्यवाद महोदय। मेरा विषय है अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान यानी एम्स में सामान्य प्राथमिक उपचार किए जाने से उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में है। एम्स एक्ट 1956 स्वीकृत कराते समय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेरा सपना है कि शिक्षा के उच्चतर स्तर को बनाने तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा के लिए एम्स की स्थापना की जाए। 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कहा गया कि विश्वसनीय एवं वहनीय टर्शरी केयर की स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए पूरे देश में एम्स की स्थापना जरूरी है। अभी तक देश में कुल 20 एम्स स्थापित हो चुके हैं। यह एम्स प्राथमिक सेवा देने वाले पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल तथा द्वितीयक सेवा देने वाले मेडिकल कॉलेजों से मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि टर्शरी मेडिकल केयर, स्नातकोत्तर शिक्षा और चिकित्सा शोध के लिए बनाए गए थे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज एम्स में सर्दी, जुकाम, निमोनिया, डायरिया, उल्टी, पेट और सिर में दर्द
के मरीजों की भीड़ लगी पड़ी है। एक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है और दूसरी ओर जो हैं वो भी हल्की फुल्की बीमारियों की भीड़ में दबे हुए हैं। ऐसे में न तो उनके अंदर उच्च शैक्षणिक अनुभव, पढ़ने पढ़ाने की भूख रह जाएगी और न ही उच्च चिकित्सा शोध कार्यों में रुचि ही रहेगी। यह अत्यंत आवश्यक है कि पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों से मरीजों का अनावश्यक रूप से भागकर एम्स पहुंचना रोका जाए और एम्स के चिकित्सकों को क्लिष्ट, गंभीर और अनिदानित मरीजों के इलाज तथा चिकित्सा शोध कार्यों के लिए आरक्षित किया जाए। एम्स को सामान्य मरीजों से भरकर फुटफॉल के आंकड़े दिखाने की जगह एम्स को सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बनाएं। श्री केसी श्रीमती ममता मोहंता, डॉक्टर एल हनुमंतैया। Thank you, Chairman sir. My subject to be raised under special mention is stopping of pre-matric scholarship for SC, ST, OBCs and minority students of class 1 to 8. Sir, today to raise the significant issue that is pre-matric scholarship for students, the central government recent decision that is on 30/11/2022 to stop the pre-matric scholarship for marginalized communities including SCs, STs and OBCs and minorities is wholly unjustified and a travesty of the marginalized section of our society in the field of education. Sir, it has been reported that the central government has rejected crores of pre-matric scholarship applications for this year. Sir, the government has said, since such students are already covered under Right to Education Act, there is no need for such scholarship. This is the explanation given by them. Sir, however, despite free education, scholarships are important tool to incentivize the education of young students from marginalized communities, SCs, STs, OBCs and minorities. Sir, such a drastic measure will surely affect the enrollment and attendance of the students from these communities at the elementary level. Sir, as per the reports, there are about 75% are getting admitted to the schools. Even now, 25% students are out of the school. This shows the seriousness of this problem. Honorable member, So, you are required to confine to the text. yes, sir, it is only There a has text. been violation on number of occasions while you were reading it out. So those statistics Let's were confine left it out, to- sir, left out actually. Let's confine to the text. Yes, sir, yes, sir. If left out something, take steps with the table office to make correction. Okay, sir. Go ahead. So thus, I would request the government of India to immediately take back their order and reinstate the pre-matric scholarship for students of classes 1 to 8, especially for these categories, that is SC, ST, OBC and minorities communities. Thank you, sir. Shri Niranjan BC. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to mention in the matter of urgent public importance regarding withdrawal of GST on Kendulip. Sir, Kendulip is minor forest produce and is the financial backbone of around 8 lakhs Kendulip pluckers, binders and seasonal workers of Odisha, who mostly belong to the tribal community and also among the poorest of the poor people of the society. The tribal people call it their right
as defined under Scheduled Tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Right Act 2006. They have the right to procure and sell the kendu leaf, but levying 18% GST on kendu leaf is affecting the trade and livelihood of kendu leaf pluckers. 18% GST needs to be withdrawn in the greater interest of the people of Odisha, particularly in the interest of the tribal people. This in turn affects the livelihood of kendu leaf pluckers, binders, and seasonal workers, and also impact the implementation of social security and welfare scheme meant for them. Our Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik ji, has also expressed his concern and written letter on this issue to central government to withdraw 18% GST. So, I urge upon the union government to withdraw 18% GST from kendu leaf for the largest interest of Odisha, sir. Thank you. To associate, Shri Sujit Kumar. I associate with the special mention. Do you want me to read it out? Your option. Sure, sir. Thank you, sir. Sir, while supplementing what my honorable colleague has said, I would like to draw the attention of the House to the predicament of more than 1 crore kendu leaf workers in India who have been suffering since the implementation of GST in 2017, on 1st of July to be precise, wherein 18% GST is being imposed upon kendu leaf producer. Sir, in the state of Odisha, this has had a significant impact on over 8 lakh kendu leaf workers, most of whom happen to be tribals and women, and who make up roughly 80% of the kendu leaf workforce. It is to be noted that the collection of kendu leaves is the financial lifeline for the subsistence of the tribal communities, sir. Sir, empathizing with the plight of kendu leaf workers, our Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, made repeated requests to the central government for reduction of GST rates on kendu leaf from 18% to 5%. Before late Sri Arun Jaitley ji, the then Finance Minister, on 29th of November 2018, and before Srimati Nirmala Sitharaman ji, the current Union Finance Minister, on 17th of December 2019. However, GST reduction was not considered, sir. Recently, in light of the trade in kendu leaves being negatively impacted by the 18% GST and the situation worsening after the COVID-19 pandemic, Honorable CM of Odisha has raised the request again for complete withdrawal of GST on kendu leaves. In his letter dated 25th of November 2022 to the Union Finance Minister, it is thereby requested that the GST on kendu leaves be removed in order to protect the livelihood of the community that depends on collection of kendu leaves for their subsistence. Thank you, sir. Shri Subhash Chandra Bose Pilli, not present. Shri Rajmani Patel. धन्यवाद माननीय सभापति जी। विशेष उल्लेख के माध्यम से रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों के परिवार को नौकरी एवं मुआवजा दिलाने बाबत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत सतना रीवा रेल दोहरीकरण में प्रभावित ग्राम सतरी कुठार हिनौता मनकहरी बम्हौरी खारी एवं बगहाई ग्राम के किसानों की जमीन ली गई, लेकिन अभी तक प्रभावित किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं दी गई है। कुछ किसानों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है, उसे परियोजना तथा उन्हीं शर्तों के तहत जमीन लेने के बाद भी 631 किसानों को नौकरी देने के लिए पात्र नहीं माना गया है। साथ ही मुआवजा निर्धारण में भी भेदभाव किया गया है, जिसे लेकर पीड़ित किसान परिवार धरना अनशन आंदोलन लंबे समय से कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन ली गई है, सभी किसानों के परिवारजनों को नौकरी का प्रावधान किया जाए तथा मुआवजे की विसंगति को दूर कर किसानों को उनका वाजिब हक दिलाया जाए, ताकि किसानों की निराशा की भावना व्याप्त हो। Shri GVL Narasimha Rao. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. My special mention is about
the need for construction of covered storage space for bulk cargo at Visakhapatnam port. So, pollution caused by emission of fugitive dust from coking coal, steam coal, and other operations at the Visakhapatnam port poses a health hazard. So, this port handles over 70 million tons of cargo and handles bulk cargo consisting of coal, iron ore, pellets, etc., pet coke, pellets, etc. So the habitation around the Visakhapatnam port has grown exponentially since the inauguration of the port several decades ago. Infrastructure needs to be created to handle bulk cargo with covered storage to minimize emission of fugitive dust. So construction of sheds is an expensive proposition and cannot be taken up by private berth operators. The proposed investment is high and the recovery period is very long. Therefore, I propose that the Ministry of Ports, Shipping and Waterways make this investment under Sagarmala project and recoup investment by collecting user charges from the users to recover the capital investments made. Sir, a time-bound action plan needs to be initiated to bring all coking coal, steam coal operations under covered sheds to arrest the emission of fugitive dust. Sir, Visakhapatnam Port Authority has already commenced construction of 2 sheds and plans have been made to construct 2 more. However, there is an urgent need to construct huge, large capacity, state-of-the-art, well-equipped sheds with stacker reclaimers or wagon loading systems. In the interest of public health and sustainability of port operations, sir, I request the central government to urgently look into this issue and sanction provision of large, well-equipped covered sheds in the immediate future. Thank you, sir. Shri Sushil Kumar Modi. Sir, my subject is protocols for national song Vande Mataram in public offices. So, our national anthem Jana Gan Man and national song Vande Mataram both have their sanctity and command equal respect and honor from Indian citizens. Moreover, the former marks the beginning of a parliamentary session. The latter closes the curtains on it. In the case of the national anthem, there are detailed protocols and instructions about the correct version of the anthem, the occasions on which these are to be played or sung, and about the need for paying respect to the anthem by observance of proper decorum on such occasions that are clearly delineated by government orders. Further, the Prevention of Insults to National Honor Act 1971 has established penal provisions against the actions of preventing of singing of the national anthem and causing disturbances to any assembly engaged in such singing. However, there are no such protocols put in place for Vande Mataram and its singing in eminent public offices. To this effect, I urge the government to consider establishing rules and protocols for the conduct of the national song in public offices, since both the national anthem and the national song are placed on the same pedestal, and Vande Mataram also occupies a unique place in the emotions and psyche of Indians. Thank you, sir. Shri M. Shanmugam, not present. Shri Mujibullah Khan, not present. Shri Sanjeev Arora, Shri Ajay Pratap Singh, माननीय सभापति महोदय, विशेष उल्लेख के माध्यम से यद्यपि मैं अपने गृह जिले में स्थित टाइगर रिजर्व के आवासियों के समस्या की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये समस्या पूरे देश के टाइगर रिजर्व के निवासियों की है। महोदय, संजय गांधी नेशनल टाइगर रिजर्व जिला सीधी मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 35 गांव स्थित हैं। इन गांवों में निवास करने वाले निवासी अनेक कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
संजय गांधी टाइगर रिजर्व में स्थित होने के कारण इन गांवों में कोई भी विकास कार्य संपादित नहीं हो रहे हैं। गरीबों के लिए आवश्यक जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित सारी योजनाओं से यहाँ के रहवासियों को वंचित रखा गया है। इन रहवासियों के विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु मात्र सरकार द्वारा प्रति वयस्क व्यक्ति 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि अत्यंत अल्प राशि है। इससे इन गरीबों की आजीविका का आधार नहीं बनाया जा सकता और ना ही आवास बनाया जा सकता है। इनका विस्थापन भी छोटे छोटे समूह में किया जाता है, जिससे इनका सामुदायिक जीवन नष्ट होता है। इनके रक्त संबंध एवं संस्कृति भी प्रभावित होती है। अतः सरकार से मांग है कि इनके विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए निर्धारित राशि बढ़ाकर रुपए 30 लाख प्रति वयस्क व्यक्ति की जाए। इनका एक मुश्त कम से कम एक गांव का विस्थापन एक साथ किया जाए, जिससे इनका सामूहिक जीवन न नष्ट हो। जब तक विस्थापन न हो, इन्हें सरकार द्वारा लागू सभी योजनाओं का लाभ मिले व जीवन के लिए आवश्यक विकास कार्य किए जाएं। इनके पुनर्वास हेतु भी सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आवश्यक भूमि, मकान बनाने हेतु सहायता राशि, नवीन बसाहट में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी इत्यादि की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। धन्यवाद। Honorable members, the House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 12th December 2022.